Assalamualaikum dear students, welcome back in the class 8th social science. We are learning the chapter 3rd of your civics portion, why we need parliament. Last last day we have discussed the role of parliament, its functions. Last time we had discussed the first function, its first function, that is to select the national government, how the national government is selected. Now today we'll discuss the second function of the parliament, that is to control, guide and inform the government. यानी कि ये पार्लियामेंट कश कंट्रोल करान, यह कश गाइड करान, तो यह कश इंफॉर्मेशन दिवान युस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट आसान छ तथ कश इंफॉर्मेशन दिवान टू रन द गवर्नमेंट. जनरली युम parliamentarians आसान छ या MPs आसान छ, they sit in the Lok Sabha where the first hour is goniuk gut आसान छ, that is devoted to questions. यानी अथ मज सवाल जवाब सवाल गसान, and that hour is called question hour. तथ छ इस वनान question hour. So this is an important mechanism through which MPs can get the information about the working of the government. यानी यह छ important गट आसान यथ मजन MPs जो आसान छ तुम छ information गवर्नमेंट्स निश रटान, इन युस वर्किंग गवर्नमेंट आसान छ तस निश information रटान कि how the government is running. यत जहनस मज थावन कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट आसान एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट आसान यानी ऑफिशियल्स हेड कर डिपार्टमेंटन तथ वन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट तिमन पे कंट्रोल थवा. By asking the questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. Ith patan chu ath mazan yani parliamentarians panin opinion thawa government breaking by asking the questions to the government. Ith patan cha akh lukun representation at gasan kait parliaments. Yum opposition parties a critical role, a healthy role ada kara for functioning of the democracy by highlighting the drawbacks in various policies and programs of the government. यानी highlight करान कि अगर हस यम पॉलिसी इख्तियार गवर्नमेंट कर यमो सदन कुम गलत नतज हेकन नीरित या असल नतज क्या नेरन सारी डिस्कस गसान अथ पार्लियामेंटस मज. अथ मज यह डिस्कस करान कि गवर्नमेंटस कतत जरूरत यानी कि पॉलिसीजन पे सपोर्ट करान अपोजिशन आसान कचन पॉलिसीजन सपोर्ट करान तो कचन पॉलिसीजन सपोर्ट करान क्या तुम लूकन हंदिस आम मुफादन मज आसान कह. This government it gets valuable feedback and is kept on its toes by questions asked by the MPs. This government question our आसान this government head of the officials आसान तिम तिस सुद इन सवालन हुन जवाब दुन कोकुन इन अथ पार्लियामेंटस मज. यानी कि they send their answers by their concerned ministers आसान इन डिपार्टमेंटन डील करान तिमन answers इस send करान. They are therefore on the toes during the question hour. In addition to all matters dealing with its finances, Parliament's approval is crucial for the government. Yus the government's maz financial approval जरूरत आसान कुन ते काम execute करने खतर सुश Parliament pass गसान. This is one of the several ways in which Parliament controls, guides
and informs the government. In this way, we see how the parliament control and guide and inform the government. The third function is law making. Laws are made in the parliament. First is introduction stage. Godnothay yel law making yel kath law kanun ban parliaments ma godnast hasa introduction yani ki ath mas im laws yus law cha asan yis chama parliamentarians brikin bayan karne ki ath mutalik chama tamam wazahat ath parliaments mas thana. Duyim pat isparinti law discuss gais parliaments mas duyim cheez ath mas discussion stage asan. यानी अत पे डिस्कस कर पार्लियामेंटर्स यह ठीक यह आम लूकन खतर रोजा ठीक अम सत मा गसन कि प्रॉब्लम वाब्लमस यह सोरे डिस्कस गसान अत पार्लियामेंटस मज त्रीम स्टेज अत मज आसान पत वोटिंग स्टेज यानी अम पत अत पार्लियामेंटस मज वोट त्रावन यानी अत लास खिलाफ या अत ला किस हकस मज वोटिंग गसान तो ये अत वोट सठा पेन तो तेल पार्लियामेंटस मज पास गसान यह पे दुशवेन जायन पास कर यानी लोकसभा मज तो राज्यसभा मज तम पतन गसान कोत प्रेसिडेंटस निश सह अत वट कर यानी दस्तखत कर अम पत मुल्क कानून बनान तो यथ मुतलिक लॉ मेकिंग मुतलिक पढ़ो नेक्स्ट चैप्टरस मज इन डिटेल यथ मज पढ़न अंडरस्टैंडिंग द लॉज यानी चूरिम चैप्टर सह अंडरस्टैंडिंग द लॉज आजुक टॉपिक करो ये इजाज़त खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।